Hello students, in this video we are going to learn the Clothesline Standard 6. Before that I request you to subscribe my channel, okay? Now we will see the explanation of this poem line by line. So first of all we have to read the first uh, stanza of this line, and after that we will explain it, okay? You can see there are hard words also. So the first stanza of the poem. Hands in hand they dance in a row, hither and to and fro, flip flap flop, and away they go, fluttering creatures as white as snow. Okay, this was the first stanza, and there are some difficult words. Hither and thither, it means in many directions. Flip flap flop, it means noise made by the clothes while moving in the wind on the clothesline. Okay, and fluttering, it means moving lightly and quickly. Okay, this was the first stanza. So we have to know that the poetess Charlotte used a little bit imaginations there, because when she used to see that clothes, she feel uh, there are something else, and so that she uses so many images there. Okay, so the meaning of the first stanza is, in the first stanza, the poetess Charlotte Cole is talking about the clothes hanging on the clothesline. To her, they look as if they are holding hands, standing in a row and dancing very happily. After that, she compares them to the white birds that fly in the sky. Okay, this was the meaning. So अगर इसे हम हिंदी में कहेंगे तो क्या कैसे कह सकते कि जब जो पोएट है, कौन क्या है पोएट का नाम, चार्लट कोल, जब ये उन कपड़ों को देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कपड़े हाथ में हाथ डाल के डांस कर रहे हैं, बहुत हैप्पीली नाच रहे हैं और एक लाइन में खड़े होकर डांस कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी अलग अलग तरह की नॉइस कर रहे हैं। जो हवा आती, हवा की वजह से जो कपड़ों का आवाज होता है ना, उस आवाज के लिए पोएटेस ने फ्लिप फ्लैप फ्लॉप ये वर्ड्स यूज किए हैं। और सबसे लास्ट में फ्लटरिंग क्रिएचर्स एज वाइट एज नो, इस लाइन में वो क्या कहना चाहती है कि ये जो कपड़े, इस कपड़ों का कंपैरिजन उन्होंने एक व्हाइट बर्ड से किया है, व्हाइट क्रिएचर से किया है, जो कि एकदम व्हाइट दिखता है, लाइक स्नो दिखता है, लेकिन रियलिटी में जो बर्ड है वो आसमान में उड़ने वाला बर्ड होता है। इस तरह से हम यहाँ पे इसका मीनिंग देख सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट सेकंड स्टांजा। ओके, this is the second stanza. You can see, like restive horses they capo and France, like fairy tales witches they widely dance, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the May March wind. Okay, so the hard words of this stanza, there are restive, it means restless or unable to remain still. Okay, in short, जो कि एक जगह पे ऐसे साइलेंट नहीं हो सकता, उस तरह का। ओके, कैप इट मीन स्लीप, प्लेइंग मैनर मतलब कूदिया मारना, जंपिंग करना। शिवर इट मीन्स रिफ्लेक्स मोशन कॉज्ड बाय कोल्ड और फियर और एक्साइटमेंट, इट मीन्स जो थर कांपना होता है ना, उसे शिवर कह सकते हैं हम। और फास्ट इट मीन्स टू वॉक विथ प्राउड एंड हाई स्प्रिंग स्टेप, मतलब ऐसे प्राउडली चलना, ऐसे घूमते घूमते चलना, उससे कह सकते हैं। सो द मीनिंग ऑफ दिस स्टांजा वी कैन सी, in this stanza the poetess compares clothes hanging on the clothesline to restless horse, okay, that are leaping and galloping with happiness. Okay, in after that poetess says, as the clothes flutter on the clothesline, they form a bowl, okay, like shape that is round at the edges and hollow in the center, okay, like a bowl. They shiver and skipping in the wind that is very happy during the month of March. Okay, so simple meaning is there. We can see, when the poetess used to see these clothes which were hanging on the clothesline, at that time she feel that, and after that she compares that clothes are looking like a restless horse who are jumping here and there. Okay,
in a playful manner. After that, she says that hanging clothes looks like dancing witches. Okay, and when it comes at that time, that clothes become like a bowl. Okay, rounded in front and hollow behind. Okay, and after that, when in the month of March, a wind comes at that time, that clothes shiver their bodies. Okay, okay, ऐसे थर थर कांपते हैं. So if we say in Hindi, then we can say there, सबसे पहले जो पोएट है उसे क्या लगता है, जो हैंगिंग कपड़े है क्लोथ्स लाइन पे, तो उन्हें लगता है कि ये एक रेस्टलेस हॉर्स की तरह, एक पागल घोड़े की तरह है, जो कभी स्थिर नहीं हो सकता, साइलेंट नहीं हो सकता. और दूसरी बात, ऐसा घोड़ा जो हमेशा इधर उधर कूदता है, भटकता है. दूसरी लाइन में क्या कहना चाहती है पोएट, ये जो कपड़े हैं उसे ऐसे लगता है कि जैसे फेरी टेल में जो विचेस होते, चुड़ैल होती, चुड़ैल की तरह, पागल की तरह डांस करने वाले लगते हैं. हवा आने के बाद जो कपड़े हिलते हैं ना, उसके लिए उसे लगता है कि ये कपड़े चुड़ैल की तरह डांस कर रहे हैं. उसके बाद थर्ड लाइन में पोएटेस क्या कहना चाहती है कि जब ये थोड़ी सी हवा आती है तो ये जो कपड़े हैं ना, बाउल की तरह बन जाते हैं. एक साइड से राउंडेड बन जाते हैं, एक साइड से हॉलो, लाइक बाउल. जब आप बाउल देखेंगे ना, आपको पता चले एक सामने से एक गड्ढा होता है, पीछे से गोल होता है. और जब मार्च मंथ की जो हवा होती है, उस हवा से वो ऐसे थर थर कांपते हैं, जैसे कि उन्हें जैसे बहुत खुशी हो गई, और एक्साइटमेंट है, या कोई और चीज के लिए जो हम कभी कभी थर थर कांपते हैं ना, उस तरह की उस कपड़ों की कंडीशन वहां पे हो गई है. So next stanza we have to see. Okay, this is the third stanza. Okay, one I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free, then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. Okay, when we read this stanza at that time, one thing we have to mention here, this word is used for something, and that something is a little bit suspense of the story. Okay, we know that this word is used for the cloth, but we cannot say which cloth is there. Okay, and for which cloth the poet is talking about. Okay, so when we read this stanza, we have to know that widely it means violently, and pegs it means clip. Okay, जो clips कभी वुड के या प्लास्टिक के हो सकते हैं, कपड़ों को लगाने के हम वो जो यूज करते हैं ना, उस क्लिप को pegs कहते हैं. So when we read this lines, then we have to know the meaning of this stanza. Okay, without specifying or stating, the poetess says once she saw someone dance excitedly and with a great struggle, and made herself freed from that situation, and then leaving the pegs and clothesline, she flew like a bird so far that no one was able to find her. Okay, and that thing is gone away from that place. Okay, so when we read this stanza, then we have to know that when a poetess was watching that close at that time, she saw something. Okay, something, and for that something she used she pronoun. Okay, something was struggling there and dancing in the air. Okay, and only the left thing was on that clothesline, that was pegs. Okay, and that thing was flew away like a bird and no one was able to find her. Okay, तो क्या देखेंगे कि जब एक बार पोएटेस उन कपड़ों की तरफ देखती है तो उसे क्या दिखता है, वो वहां से कोई तभी चीज से उड़ के जा रही है, हवा में डांस कर रही है, बहुत एक्साइटेडली डांस कर रही है, स्ट्रगल कर रही है खुद को फ्री बनने के लिए, हवा में इधर उधर घूम रही है. और जब वो उड़ के जाती है तो नीचे कौन सी चीजें रहती है, बस पेग्स रहते हैं, वो क्लिप्स रहते हैं जो क्लोथ लाइन पे लटके हुए रहते हैं, वही पीछे रहता है, बाकी सब चला जाता है. और वो जो उड़ने वाली चीज ऐसे उड़ के चली जाती है मानो जैसे कोई पंछी हवा में उड़ रहा है. और हमें पता है कि उड़ने वाले पंछी को कोई भी पकड़ नहीं सकता, उस तरह से वो जो कपड़ा है, वो जो चीज है, ऐसी उड़ के चली जा रही है जो जैसे कि मानो कोई भी नहीं कि जो उसे पकड़ सकता है. So next stanza,
This is the fourth stanza. Okay. First we have to read, and after that we will explain it. Okay. Poetess says that I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flapping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drawn in the sea. Okay, two words only are there. Gleam, it means a shining or shine, or a ditch, it means a pit at the side of a road or field. जो गड्ढा होता है बहुत बड़ा पानी जाने के लिए, हाँ, जैसे ये कहते हैं नाला जो होता है ना उस तरह का, लेकिन बड़ा होता है, उसे डिच कहते हैं. Okay, so the meaning of this fourth stanza is when first of all the poetess talk about that something. Okay, and for that she used a she word. Okay, we know that she is talking about the cloth. Okay, but she used for that cloth she word. Okay, when and after that we have to know that this stanza is continue with the suspense. Okay, the poetess compares that someone to a shining sail. The poetess tells us that she was flipping, flapping only for the fun and happiness. After that, we have to know that she flew away so fast and nobody was able to catch her. Okay, and after that, she knows what maybe happened with that thing which was flew away from that clothesline. Okay, and she was just thinking of a worst that could happen. A worst means a little bit bad things. The poetess wonders whether she is hiding in a ditch, nala, or maybe drawn in the sea. So हम क्या देखते हैं, ये कंटिन्यू जब हम देखेंगे क्या पीछे की लाइन से, तो एक पीछे के स्टांजा में एक सस्पेंस था कि एग्जैक्टली जो उड़ के चली गई वो चीज क्या है, और उसी सस्पेंस को साथ में रखते हुए पोएटेस और कुछ कंपैरिजंस करती है. उसमें क्या कहते हैं, उसे लगता है जो उड़ के चली गई चीज है वो अभी शाइन कर रही है, सेल की तरह से सेलिंग कर रही है, सन में चमक रही है, और फ्लिपिंग फ्लोपिंग और फ्लैपिंग कर रही है, इंजॉय कर रही है, फन कर रही है, और किसी को भी पता नहीं कि एग्जैक्टली वो चीज कहाँ गई है. शायद किसी डीच में गिर गई होगी या समंदर में डूब गई होगी. ऐसे वो इस फोर्थ स्टांजा में पोएटेस कहना चाहती है. सो लास्ट स्टांजा, this is the last and final stanza of this poem. Okay, and in the final stanza there are only two lines. We can say it is a couplet. So the lines are there. She was my handkerchief not long ago, but she will never come back to my pocket, I knew. Okay, and when we read this stanza, our suspense ended here. We realize that the thing which was flew away, that was poet's handkerchief. Okay, and this lastly we realize that one thing, the thing which was flew away, that was poetess handkerchief. Okay, so we have to know that it's only in the last these two lines of the poem that the poetess reveals that she was talking about her handkerchief that flew away. Not very long. She is sure that it will not come back to her and it's lost forever. लास्ट में हमें क्या पता चलता है, पोएटेस जो एक उड़ के चली गई थी चीज, उस चीज के बारे में जो बात करते हैं वो चीज क्या थी, पोएटेस का हैंडकरचिप था, रुमाल था, जो कि ज्यादा दूर नहीं लेकिन अभी चला गया. लेकिन ये भी बात सच है कि एक बार वो चला गया तो वापस वो उसके पॉकेट में नहीं आ सकता. इस तरह से ये फाइनल स्टांजा था. ओके, सो लास्टली वन थिंग वी हैव टू मेंशन हियर, the poetess begin the poem with happy notes of clothes dancing on the clothesline, like, but one thing we have to know that here she ends this poem with a sad note of her handkerchief flying away and never come back. Okay, this in this way this poem we have studied. Okay, so ये पोएम जब भी पोएम शुरू हुई थी तो एक हैप्पी मोमेंट था उसमें
कपड़े डांस कर रहे हैं, सभी इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट है। फिर पोएम के मिडल के दो टांसा में जब आए तब पता चला कि पोएम में कुछ सस्पेंस है, बहुत सारे कंपैरिजंस, बहुत सारे इमेजरीज उसमें यूज की है। ओके, बहुत सारे सिमिलीज वहां पे आप देख सकते हैं। ये दो बीच में के दो स्टांजा थे, उसमें बहुत बड़ा सस्पेंस था, लेकिन जब लास्ट में हम पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है लास्ट में एक लिटिल बिट सैड थिंग है, और वो कौन से, कि पोएट का हैंडकरचिप टूट के चला गया, जो कि उसका फेवरेट था, लेकिन अभी वो वापस उसके पॉकेट में आएगा तो डेफिनेटली नहीं। सो इन दिस वे दिस पोएम एंड्स हियर। So once again I request to all of you, subscribe my channel and get notification of new videos. Thank you for watching my video.